Hi everybody, welcome back to another lesson of Introduction to JavaScript. And this lesson is an extension of our previous lesson जिसमें हमने variables को discuss किया. हमने देखा कि कैसे JavaScript एक dynamically typed language है, which means जितनी भी type checking है वो run time पे होती है. So if you're coming from a background of C++, Java or C Sharp, I know it will be a bit different to write code in JavaScript. Like there are ways to, use type checking and to enforce some sort of static time errors. There are ways through which you can do that, लेकिन उसके बारे में हम थोड़ा सा आगे जाके बात करेंगे. तो इस लेसन में हम बेसिकली बात करेंगे स्कोप्स के बारे में. हमने स्कोप के बारे में अभी प्रीवियस लेसन में भी डिस्कस किया ऑफ हाउ ग्लोबल स्कोप यू नो conforms and how hoisting takes place within the global scope. इस लेसन में हम उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे. So let's jump into it. So in the previous lesson, we talked about how this assignment acts as a global variable. And we also saw कि कैसे ये B की assignment भी without a var acts as a global variable. वो कैसे कि both of these assignment work, and some of you might be confused that what is the point of even declaring a particular variable अगर हमारा variable just इस तरह से बन जाता है by just using the name and assigning it a value. तो JavaScript doesn't frown upon it. So what's the point? This is one of the most interesting issues that have been there for years. Now, how these kind of assignments can become a problem for us, उसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि मैं लोकल स्कोप को भी इंट्रोड्यूस करूँ, जो कि मैं इस लेसन में करूँगा. ऑल्दो वी हैव अ सेपरेट लेक्चर on functions, but we will see how you can declare and call a function within this lesson. So just a quick you know just a quick word on the global variable. जितने भी global variable है ना, what is this global variable जो कि मैं बार बार repeat करता हूँ, तो क्या उसकी root क्या है? तो उसकी root है window object. Now window object is a tabs object जो आपके ब्राउज़र का टैब है, जो कि आपकी सारी मेमोरी कंजम्पशन को भी मॉनिटर कर रहा होता है, आपके वेरिएबल असाइनमेंट्स को भी मॉनिटर कर रहा होता है, उनके लाइफ साइकिल को भी मॉनिटर कर रहा होता है, फंक्शन कॉलिंग को भी मॉनिटर कर रहा होता है, और इवेंट लिसनर्स को भी मॉनिटर कर रहा होता है. सो दिस इज लाइक द रूट ऑब्जेक्ट. नाउ एवरी ग्लोबल वेरिएबल और अ फंक्शन इज अटैच्ड टू दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट. To view it out, if I just type in window A, I can see that it registers a value of hello world. Now, if I remove it and registers B, I get a value of hello again, which again confirms कि B एक global scope में lie करता है. How can we restrict it और इसके repercussions क्या हो सकते हैं, उसके लिए हम introduce करते हैं local scope. तो ग्लोबल स्कोप तो हो गया स्क्रिप्ट लेवल पे. अब लोकल स्कोप क्या है? लोकल स्कोप के लिए वी हैव टू डिफाइन अ फंक्शन. सो लेट्स से आई हैव अ फंक्शन जिसका नाम है चेक, और इस फंक्शन के अंदर मैं डिफाइन करता हूँ एक पर्टिकुलर वेरिएबल जिसकी वैल्यू है हेलो. Yet again, I am so lazy and not creative in terms of defining variables and their values. So yeah, just bear with me. Let's print out the value here. Let's get rid of this console statement and let's call this function out check. Now what happens is that जब मैंने ये function call किया, C as a variable assign हुआ locally to this particular method. Now let's review data structures here. आप अगर डेटा स्ट्रक्चर्स के बैकग्राउंड से आए हैं तो एक डेटा स्ट्रक्चर है विच इज़ नोन एज स्टैक, जो कि इस विंडो ऑब्जेक्ट के साथ भी एसोसिएटेड है. तो ये स्टैक करता क्या है? स्टैक फंक्शन कॉलिंग को हैंडल करता है. जब भी आपको फंक्शन कॉल करते हैं तो एक स्टैक होता है, वो तमाम फंक्शंस अलाइन हो जाते हैं उस स्टैक पे, एंड द टॉप मोस्ट पॉप्स आउट and it reverts back the memory as they execute. So when check is called, it defines a particular block in the memory within the stack, और इस मेमोरी के अंदर ही ये C वेरिएबल भी डिफाइन हुआ हुआ है. सो व्हेन द चेक मेथड इज कॉल्ड ऑफ, दिस मेमोरी इज रिवर्टेड, जिसकी वजह से ये जो वैल्यू ऑफ C है ये भी रिवर्ट कर जाती है.
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि if you try to access C after calling the method, you'll get a reference error that this memory block or this particular variable does not exist. So this is a perfect example of a local variable. Now, before ending this lesson, let me show you a trick. What if, what if I remove the var keyword from here and I get the value of C here? Whoa, I wanted to type question mark here. So ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों हो रहा है? Any guesses? Take 2 seconds and think. Yes, this exists in the global scope here. So if I type in window.c, I get the value of C here, which means कि C ने अपने आप को window object के साथ attach कर लिया है. Now this is a very big problem, but this also shows the repercussions of not using var. So I hope you get the idea and I hope you got the concept. I'll see you in the next lesson.